Okay, so let's go with the basic structure of the periodic table. Okay, and let's understand how chemical elements are arranged in the periodic table. So, Azlan and Rafi, you took the previous class, right? The first introductory class, and I told you, okay, what is the periodic table? What is the definition of the periodic table? Periodic table is a table which contains the list of all the elements present in the earth. Yes, yes. While that's true, okay, it's not very accurate. Azlan, what do you want to try? Table of chemical elements in a order of their number in groups as well. Exactly. Okay. This is also closer, but the exact definition is that periodic table is an arrangement of elements in order of the increasing atomic number. Okay. So the elements are arranged in order of the increasing atomic number in the periodic table. So let's go over some of the important numbers when it comes to chemical elements. So we have the proton number and we have the nucleon number. What is another name for nucleon number? Nucleon number, mass number. Exactly. Okay. So the nucleon number, atomic mass, mass number, they're all the same thing. Okay. They're different names of the same thing. सही है सो प्रोटॉन नंबर एटॉमिक नंबर सही है ये भी दोनों सेम होते हैं एटॉमिक नंबर स्लैश प्रोटॉन नंबर दे आर सेम एटॉमिक मास मास नंबर क्या कहते हैं न्यूक्लियॉन नंबर दे आर सेम ठीक है एग्जैक्ट सेम थिंग्स so proton number of protons in the nucleus neutral atom में proton equals the number of electrons that I told you earlier nucleon number is the mass number which is the sum of protons and neutrons inside the nucleus. Why is it known as a nucleon number? Nucleon number इसको इस वजह से कहते हैं क्योंकि protons and न्यूक्लियस जी जी मैं भी यही कहने वाला था, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों को exact कंबाइन करके जो लफ्ज बना है। yes yes excellent Rafi. So basically जो न्यूक्लियन नंबर है ना उसको न्यूट्रॉन नंबर इस वजह से कहते हैं क्योंकि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स दोनों न्यूक्लियस के अंदर होते हैं ठीक है दे आर न्यूक्लियस के particles होते हैं right they're in the nucleus so because they belong in the nucleus they are collectively called nucleons ठीक है इस वजह से उसको न्यूक्लियन नंबर भी कहते हैं so it's a sum of protons and the number of neutrons simple okay so overview of the periodic table थोड़ा सा ले लेते हैं periodic table जैसे मैंने बोला it's an arrangement of elements in order of their increasing atomic number periodic table में there are vertical columns which are known as groups and there are 8 groups यहाँ पता नहीं 18 क्यों लिखा हुआ है इसको जरा करेक्ट कर लेंगे so there are 8 groups सही है and बीच में जो एक बार आता है that अभी हम आगे देखेंगे बीच में जो एक इंटरवल आता है that is the वो जो बीच में इंटरवल आता है उसको क्या कहते हैं इस्लाम Sorry? जो ग्रुप 1 2 और 3 के बीच में एक इंटरवल आता है पीरियोडिक टेबल में एक ब्लॉक आता है एलिमेंट्स उन एलिमेंट्स का क्या नाम होता है I don't know. okay so they are called as the transition elements ठीक है also called transition metals so अभी हम देखेंगे इनको सही है so the vertical columns are known as groups and the horizontal rows are known as periods groups जो हैं they are 8 in total जबकि periods जो हैं they are 7 in total right and जो columns है ना they are basically the groups जो group number है it represents the number of electrons in the outermost shell outermost shell का दूसरा नाम क्या होता है अजलान Uh, it starts with a V Rafi would you like to try कौन सा नंबर? group number जो है it represents the number of electrons in the outermost shell right outermost ये shell का दूसरा वैलेंस नाम क्या शेल, होता है yes वैलेंस शेल। yes exactly valence shell ठीक है
तो जो पीरियोडिक टेबल होता है ना, उसमें ग्रुप्स जो हैं उनका जो नंबर होता है ना, दे रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, राइट। जबकि जो पीरियड्स होते हैं ना, दे आर हॉरिजॉन्टल रोज एंड दे रिप्रेजेंट द ऑक्यूपाइड नंबर ऑफ शेल्स। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर एक एलिमेंट है विच इज इन द थर्ड रो, सही है, सो उसके अंदर 3 शेल्स होंगे, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन की शेल होंगे उसके अंदर, विच आर ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन्स। सो हम एक दो ट्राई भी करेंगे, फिर आप लोगों को पता चलेगा कि हाउ दिस वर्क्स। Metals or non-metals, metals जो होते हैं, they are usually arranged, they are found on the left side of the periodic table, जबकि जो non-metals हैं, they are found on the right side of the periodic table. And generally जो properties होती हैं metals और non-metals की, कि metals जो होते हैं, they are good conductors of heat and electricity, they have high melting and boiling points, whereas on the right side we have non-metals, which are poor conductors, they have low melting and boiling points. ओके, सो हमने पहले से पढ़ लिया है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। आई होप इसको फिर से मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अजलान, रफ़ी, No. I just have a ठीक, question. Why is या। there a Right. Z in brackets and a A in brackets? Why is there a Z in bracket and A in bracket? Yeah. Oh, so these are the symbols to denote atomic number and atomic mass. ठीक है, there's literally no sense. ऐसा कुछ वो नहीं है, बस Z is the symbol that is used to denote atomic number and atomic mass. अक्सर जो पुराने वाले periodic tables होते थे ना, उसके अंदर Z equals and number लिखा होता था, and atomic mass के लिए A equals ये number लिखा होता था इस तरह से. So that doesn't really matter. Just a symbol. ठीक है. अच्छा. So now, you have elements in the periodic table, and elements जो होते हैं ना, when you zoom into one of those elements, so they look somewhat like this. So for example, we have nitrogen here, and nitrogen has a chemical symbol. So every element has a chemical symbol. It can be a 1 letter or a 2 letter chemical symbol. So nitrogen का Na, sodium का Na है, oxygen का O है, calcium का it is Ca for calcium, and for maybe chlorine it is Cl. तो हर एलिमेंट का अपनी आइडेंटिटी है, अपना उसका वो है केमिकल सिंबल है, राइट। ओके, सो जो टॉप नंबर होता है, इट इज द एटॉमिक नंबर राइट हेयर, दिस नंबर, एक मिनट पॉइंटर ऑन कर लेता हूँ, दिस नंबर राइट हेयर, दिस इज द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का दूसरा नाम क्या होता है? प्रोटॉन नंबर, सही है। दिस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और इन अ न्यूट्रल एटम इट इज ऑल्सो इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. The larger of the two numbers, एक trick है, the larger of the two numbers is the atomic number. ठीक है, atomic number, sorry, atomic mass, सही है, sorry, atomic mass. अच्छा, atomic mass का दूसरा नाम क्या होता है अजलान? Nucleon mass number. हाँ, न्यूक्लियन नंबर, नॉट न्यूक्लियन मास नंबर, न्यूक्लियन नंबर, सही है। सो न्यूक्लियन नंबर, एग्जैक्टली। सो 14 जो है यहाँ पर, दिस द न्यूक्लियन नंबर, यानी कि क्या होगा कि there are basically 14 protons plus neutrons in the nitrogen atom. Now, if I were to calculate the number of protons inside the, can you guys just tell me कि how many protons does nitrogen have using this information? 7. Neutrons, ठीक है, good. न्यूट्रॉन कितने होंगे? 7. 7. किस तरह से 7 निकाले? 14 minus 7. सही है, ठीक है, और ठीक है, बहुत आसान है, ठीक है, 14 - 7, एंड देन जो मैथ्स है कितनी हो जाएगी? दैट इज 14, 14. ठीक है, हाँ, प्रीटी सिंपल। सो ये आपके पास ना, ये भी आता है पेपर में ना, क्या आपको प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और ये लिखना होता है, दैट्स प्रीटी सिंपल। सो मूविंग ऑन, सो दिस इज द पीरियोडिक टेबल, right? And periodic table में you can see that there are like 8 groups in the periodic table. So yeah, so this right here, this right here is group 1, okay, and group 1 and group 2. Now this is group 3, 4, 5, 6, 7 and 8, ठीक है, इस तरह से होते हैं ग्रुप्स। अब जो मैंने क्या बताया था कि पीरियोडिक टेबल में ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट
So yeah, left side way we have metals, and on the right side of the periodic table we mainly have non-metals. So yeah, so it progresses from metals, ठीक है, metals, then we have the transition metals in between. ये जो बीच में block मैंने आपसे नहीं पूछा था अजलान क्या होता है इस बीच वाले block का नाम. These are the transition metals, ठीक है, जो yellow हैं सारे. The transition metals इनकी अपनी properties होती हैं, which we will be going over in our lecture of periodic table. फिर we have the metalloids, ठीक है, जो boron, aluminium और gallium and carbon वगैरह जो हैं, these are metalloids. And then you have non-metals here. अच्छा, on the extreme right side of the periodic table we have group 8. Group 8 की क्या खास बात है? Rafi, would you like to tell us group 8 की क्या खास बात है? ग्रुप एट की बात यह है कि वो उसके वैलेंस शेल में हमेशा मैक्स अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिसकी वजह से वो कोई भी रिएक्शन नहीं करेंगे और वो सारे नॉन मेटल्स गैसेस, Exactly, exactly. ठीक है. So these are all gases and they are all inert elements. ठीक है. नोबल Yeah. गैसेस. Yes, yes. This is the common name for group 8 elements known as noble gases, and they're all inert elements. ठीक है. तो basically they'll not react with anyone. And क्यों नहीं react करते? क्योंकि they all have complete valence shells in which all of the electrons are paired. Right. So this is the general overview of periodic table. Right. अब हम यहाँ पर इस recording को stop